Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So this is the fifth video of our OOPS placement series, and in this video we will discuss what is inheritance in OOPS with details. Okay, in details. So I will also cover the interview question and what is the most important thing about the inheritance in OOPS. So please watch this video till the end. Okay, so let's discuss about the inheritance in OOPS. So the first question is arises ki what is the definition of inheritance? So extend the feature of one class to another class is called a inheritance. Simple, very simple. Because in interview you have to remember the very simple thing ki extend the feature from of one class to another class is called inheritance. And after that you can explain it like inheritance is a fundamental concept of object oriented programming that allow a new class. New class means a new class subclass is also called a subclass to inherit properties and behavior from existing class. Like if we have any class and if we want to create another class by extending these existing class properties and behaviors. So this is called inheritance, and this promotes the code reusability. The main advantage of inheritance is the code reusability. It provide the code reusability. Like अपने पास अगर कोई क्लास है और उसमें कुछ मेथड है एंड अपन चाहते हैं कि कोई दूसरी क्लास बनाना चाहते हैं और उसमें वो कॉमन मेथड वो सेम ही है, तो वी डोंट नीड टू राइट द that method again. So I just extend this existing class. So this is basically called a inheritance. It establishes a hierarchical relationship between the classes. तो ये hierarchical relationship establish करता है. Okay. So this is the two terms, super class and subclass. So super class is also called a parent class. The class being inherited from. जो class inherit होती है, this is called a parent class or super class. And the subclass, so subclass is also called a child class and the class that inherit from the सुपर क्लास. तो जो सुपर क्लास है पेरेंट क्लास के द्वारा जो इनहेरिट करती है सुपर क्लास है पेरेंट क्लास को, तो कॉल्ड अ चाइल्ड क्लास या सब क्लास. सो इन जावा एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ सब क्लास. सो इन जावा में एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं फॉर एक्सटेंडिंग द क्लास और इनहेरिटिंग अ क्लास. So let's see the example. So this is like our super class, which is parent class, and there is some field and methods. Okay, and there is my child class or subclass which extend the super class. So it can access these method and fields also because this is the parent class. तो child अपने parent की properties और method access कर सकता है. We will see also example. So don't worry about it. Let's see the types of OOPs. So in OOPs there are 5 type of inheritance. So first is single inheritance, second is multiple inheritance, third one is multi-level inheritance, and fourth is hierarchical inheritance, and fifth is hybrid inheritance. So these are the 5 type of inheritance in OOPs. This is Java only supported these 3: hierarchical, multiple, and single. These 2 are not supported by the Java. This is the most popular question of the interview कि वो कौन कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करती है और कौन कौन सी टाइप की नहीं करती है. अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, व्हाट इज द रीजन. So we will also discuss. So this is a multiple inheritance not supported by the Java. Hybrid inheritance not supported by the Java. So these 2 are not supported by the Java. So इसके पीछे का रीजन, what is the reason कि सपोर्ट नहीं करती. So let's see. So let's see the hierarchy of this. So this is single. So one parent and one child, which simply extend the parent class. So this is class B, which extend the class E. So this is single inheritance. If we say the multi-level, so multi-level means class B extend the class A and class C extend class B. So class C can access the property of class B and class A also, both. Okay. Hierarchical. This is hierarchical. So hierarchical में क्या होता है कि क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी एक्सटेंड द क्लास ए. एक ही क्लास को दोनों मेथड दोनों क्लासेस एक्सेस या एक्सटेंड कर रही हैं. ओके, दिस इज हायरार्किकल. एंड द फोर्थ वन इज मल्टीपल. ओके, सो इफ वी हैव अ क्लास ए एंड क्लास बी, so class C inherit both class A and class B. So what is the reason कि multiple जावा द्वारा सपोर्टेड नहीं किया जाता था, क्यों? बिकॉज इफ लेट्स से कि क्लास ए के पास कोई मेथड है लाइक सो एंड क्लास बी के पास भी कोई मेथड है सो, एंड क्लास सी ने क्लास ए एंड क्लास बी दोनों को एक्सटेंड किया हुआ है. सो इफ वी क्रिएट अ
क्लास सी का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपन, देन वी कॉल द शो मेथड। तो जावा विल कंफ्यूज कि कौन सा मेथड कॉल करना है, कौन सा शो मेथड, क्लास ए वाला शो और क्लास बी वाला शो। तो दिस इज अराइज द एम्बिगुइटी एरर। सो दिस इज द एम्बिगुइटी एरर अराइज, दैट्स व्हाई जावा नॉट सपोर्टेड बाय द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज दैट इज द रीजन कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ एम्बिगुइटी एरर। दिस इज द मेन सिनेरियो, वी विल सी also example, so it will clarify to you. Same thing apply on a hybrid, because the class B class C inherit class A and class D inherit class C and class B। तो सेम चीज इसके पास भी, अगर क्लास बी के पास सो मेथड है, क्लास सी के पास भी है, क्लास डी का अगर ऑब्जेक्ट अपन बनाते हैं, तो देन जावा अगेन विल कंफ्यूज की सो कौन सा मेथड, किसका सो मेथड कॉल करना है, क्लास सी का और क्लास बी का। सो दिस इज द मेन रीजन। ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, this is also another one important interview question कि we can implement multiple and hybrid inheritance in Java using the interface। so interview कभी पूछता है कि अगर क्लासेस से नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हो, कर भी सकते हैं कि नहीं। so we can implement the multiple and hybrid inheritance in Java using the interface। we will see the discuss the multiple and hybrid inheritance in our interface chapter। okay, so don't worry about it। So let's see the example. So this is the single inheritance. It is supported by the Java. So there is only one class inherited by the another class. So this is my child class dog, which extend the animal class। So here भी है, here code reusability की बात आती है। Like अगर if we have an animal class, in inside its class we have a function, a more method eat। So eat eat method क्या करता है, just printing की this animal eats food। Okay, so इन फ्यूचर अपन अगर डॉग क्रिएट करते हैं, कोई क्लास डॉग करते हैं, तो विच एक्सटेंड एनिमल, बिकॉज अपन को ईट मेथड की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली डॉग भी ईट करेगा ही कुछ ना कुछ। तो बाय आई राइट द अगेन ईट मेथड। सो अगर अपन इनहेरिटेंस नहीं यूज करते, देन वी नीड टू राइट द अगेन दिस मेथड इनसाइड दिस क्लास। सो जस्ट एक्सटेंड दिस क्लास। सो ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाएगा इस क्लास में। एंड इनसाइड द डॉग क्लास के पास भी अपना एक खुद का मेथड है, वर्क, है ना। ओके, सो डॉग वॉक। ओके, let's see the another one, multi-level inheritance। This is also supported by the Java। So a class inherits from another class। तो एक क्लास है जो किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट, जो किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, लाइक मेमल्स विच एक्सटेंड एनिमल, एंड विच इज टर्न इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनदर क्लास। सो लाइक अगर डॉग क्लास है, वो मेमल्स को इनहेरिट करती है, मेमल्स को एक्सटेंड करती है, एंड मेमल क्लास ऑल्सो एक्सटेंड कर दी एनिमल। सो दिस इज द डेफिनेशन, अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। एक क्लास है जो किसी और क्लास को इनहेरिट करती है, एंड विच इज टर्न इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, जो कि किसी और अनदर क्लास से इनहेरिटेड है। ओके, सो दिस इज द मेन पेरेंट क्लास विच एनिमल, एंड अ मैमल क्लास विच एक्सटेंड द एनिमल। ओके, सो जी ईट मेथड कोड रियूजेबिलिटी की फिर से बात आती है कि लाइक मैमल और डॉग दोनों में अपन कोई ईट मेथड चाहिए, तो क्यों ना इनहेरिटेंस कर लिया जाए ताकि कोड रियूजेबिलिटी हो जाए। सो दिस इज द मेन रीजन कि कोड रियूजेबिलिटी। ओके, एंड द मैमल एक्सटेंड एनिमल, inside this mammal method has a walk method, and the dog inside the dog class has a walk method। okay, and this is the last one which is supported by the Java, and other दो support किए नहीं जाते। we will see the inheritance chapter में वो सब देखेंगे अपन कैसे implement कर सकते हैं using inheritance using interface। okay, hierarchical interface, तो multiple classes inherit from the one subclass, one super class। so इसमें एक super class होती है and multiple child class होती है। जैसे इस super class की multiple subclasses like dog and mammals। okay, so mammals also extend the animal, and dog is also extend the animal, so both extend the animal class। okay, so when we create a mammal object, so we can access this eat method and this walk method also, and when we create the dog object, so we can able to accessible this bark method and this eat method also। so let's see the example, and after that we will understand the some interview important note about the interview purpose। okay, so just move the online GDP, select the Java here. Let's remove this code. Let's zoom it. Okay. Let's create the one class. Name is parent.
Okay, inside this we have a method. Let's see. I'm seeing the example of this single inheritance. Okay, so let's create a parent class. Like, let's create the animal class. Okay, inside this method have a eat method. So public void eat and print something. So like system dot out dot println. So animal eat. Okay, this is the our parent class. Let's create another class. It's called as dog. Okay, which extends which extends animal class. Okay, capital. And inside this dog class, we have a method public void bark. Okay, and let's print something. Okay, so dog barks. Okay, and inside the main class, I'm creating the object of this dog class. Okay, I'm creating the object of this dog class. So inside the dog class, dog is equal to new dog. Okay, and dog dot, this is the public method, so we can call directly. So dog dot this bark, so I'm calling the bark method, and dog dot eat. So this eat is also accessible in this class because this is inherited by the parent class. So parent class की पूरी property can accessible by the child class. Okay, and let's run it. It is happening. So you can see the call. First we will call the dog dot walks. So this call this method, and then I call the dog dot eat. So this is the eat. So this is basically a code reusability. So we can use this code inside any class, okay, which extend this class. Let's see the another catch about the interviewer. If I create the animal class object, so can I access this method, this child class method, or not? So let's create a animal class method, animal class object. So animal is equal to new animal. Animal. Okay, so I'm creating the parent class object. So can I access this method? So I am access this method because ये तो इसका ही method है, so it can accessible. Animal dot eat, and let's run it, and you can see this is accessible. But when can I access this method? So I cannot, because when we call this method, so it will give the error. Okay, what walks, it is walk. It will give the error because it says the cannot find the method. So because if we create a parent class method, a parent class object, so it can accessible केवल parent class खुद की ही properties access कर सकता है, ना कि child class की. Okay, so और child class, parent class and child class दोनों की property access कर सकता है. This is the another interview question. Okay, let's see the example of multi-level. Okay, so this is, let's create another one which is called a mammal class. Okay, class mammal extend, it's extend the animal. So this is this example. So this is a hierarchical example. Okay, so multiple classes can inherit a one super class. So this is the our super class in animal which inherited, dog also inherited this, and mammal is also inherit this. Create a public void wall
walk. Okay, system dot out dot println and mammal walks. Okay, so if I create the mammal class object, so I can access this method and this method because this is the parent class की properties. So let's say create a, so अपने पास dog class का तो already है. So if I call the dog dot eat, it is called dog dot, अगर dog dot अपन करेंगे work method, so this is also called, this will also call. Okay, then if I create, let's remove it, let's let's create a mammals object. Mammal is equal to a symbol and okay, so mammal I can able to call the walk method जो कि इसका ही मेथड है, this one. So this one will call, and if I want to call to this, इसकी parent class का अगर कोई मेथड कॉल करना चाहते हैं then we can able to call them. So like if I call the mammal dot eat, it will also call. Let's run it, and you can see the code is running perfectly. So when I call the dog and walk, so it will call. When I call the mammal walk and animal eat, so both the. So this is the example of hierarchical inheritance. Okay, the last one is multi-level inheritance. So multi-level inheritance में क्या है? A class inherits from another class which is turned into a class. So let's copy it. Okay. Okay. So this is our parent class animal, and this is a mammal class which extend the animal, and the dog class which extend the mammal. So if I create the dog object, so it can accessible as walk class by walk method and eat method एंड द डॉग मेथड ऑल्सो, ये तीनों मेथड को एक्सेसिबल कर सकता है बिकॉज इसकी दोनों पेरेंट क्लास है. दिस इज मेमल्स तो पेरेंट क्लास है, ये एनिमल भी उसकी पेरेंट क्लास है बिकॉज एनी डॉग की पेरेंट क्लास है मेमल एंड मेमल की पेरेंट क्लास है एनिमल. ओके, so if I create the doc object is already created, let's remove this and to work, and if I call the walk method then it will also call. So तीनों मेथड अपन एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द चाइल्ड and this is उसके parent और grandparent. So animal is a grandparent of dog, grandparent class of dog. Let's run it. So you can see it is perfectly done. Okay, so let's see some note about which you need to most important for interview purpose. So first is when we create a parent class object, then we can only access the parent class मेथड. सो अगर आप अपन आपने देखा कि जब अपन पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन वी कैन ओनली एबल टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड, अपन चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते. बट व्हेन वी क्रिएट अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, सो इट कैन एक्सेस देयर मेथड, अपने मेथड तो एक्सेस कर ही सकता है एंड देयर पेरेंट पेरेंट क्लास के मेथड भी एक्सेस कर सकता है. ओके, इट्स अनदर वन. व्हेन वी क्रिएट अ child class object, then first call a parent class constructor. So let's see this example also. So this is my animal class, let's remove it as of now, and it's animal को extend करती है. Okay, so this is our parent class and this is our child class, and if I when I create the object of the child class, एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, सो लेट्स डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फर्स्ट. अगर आपने कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो. ओके, लेट्स क्रिएट पब्लिक एनिमल. ओके, the system dot out dot println parent constructor. Okay, and
let's copy it. Let's copy it. Also define the constructor in the child class. So just change the name. This is dog and this is child constructor. Okay, so when we create the object of dog class, so first constructor जो कॉल होगा वो कॉल होगा पेरेंट क्लास का. ओके, सो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है. ओके, कि when we create the object of the child class, so पहला कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा, चाइल्ड क्लास का या पेरेंट क्लास का. लेट्स रन इट. सो यू कैन सी द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलता है क्योंकि यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया है. फर्स्ट इट कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. So we will see when we talk about or discuss about the super keyword, we will discuss क्योंकि जावा ऑटोमेटिकली यहाँ ऐसा लिख देता है. सुपर कीवर्ड इज बेसिकली यूज टू अ पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए यूज होता है. वी विल सी इट लेटर विद डिटेल्स. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. दिस इज द बेसिकली कि पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिट. तो जब भी अपन किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता है. ओके, रिमेंबर. And parent class reference can point a child class object, but the child class reference cannot point the parent class object. So let's see also discuss about it. So अगर अपने पास एनिमल का रेफरेंस है, लाइक अपन क्रिएट करते हैं एनिमल का रेफरेंस, दिस इज नथिंग बट अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट विच पॉइंट द ऑब्जेक्ट. एंड अपन क्रिएट करते हैं डॉग का ऑब्जेक्ट. देन ये क्या कर सकता है, व्हेन वी क्रिएट अ एनिमल का अगर अपन रेफरेंस लें और डॉग का ऑब्जेक्ट बनाए, सो ये चल देगा. दिस इज राइट, बिल्कुल सही है. बट व्हेन वी अगर अपन इसका वाइस वर्सा लिखें, लाइक डॉग का रेफरेंस बनाए एंड एनिमल को अपन पॉइंट करें, एनिमल क्लास को अगर अपन पॉइंट करें, देन इट इज नॉट, क्योंकि अपन पेरेंट क्लास को पॉइंट नहीं कर सकते. चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को कभी भी पॉइंट नहीं कर सकता है. सो दिस इज रॉन्ग. इट विल गिव द एरर. यहाँ पर रन करके भी देख लेते हैं. ओके, बोल रहा है ना, द एनिमल कैन नॉट कन्वर्ट टू द डॉग बिकॉज एनिमल पेरेंट क्लास है एंड डॉग चाइल्ड क्लास है. तो चाइल्ड क्लास का रेफरेंस कभी भी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता है, लेकिन पेरेंट क्लास का रेफरेंस ऑलवेज पॉइंट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द, ये कुछ चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर इंटरव्यू पर्पस. एंड दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस. ओके, so I have covered all the things about the inheritance. Okay, thank you. अगर